आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एक ग्रुप सॉन्ग मुझे याद आया जो हम लोग जेएनयू में हम लोग गाया करते थे। जंगखोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, जंगखोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार वे शांति पे बार बार, जंग नहीं उठाओ आवाज। When two countries declare war against each other, the entire population gets involved in that war. नहीं, ये तो हुआ कि वॉर को और आर्म्स को रेगुलेट करने के एफर्ट्स, लेकिन इसके साथ साथ फिलोसॉफिकली पॉलिटिकली भी काफी इस पे सोचा गया कि कैसे हम वॉर से, जंग से हम निजात पा सकते हैं। An absolute privilege to have this talk interaction with the participants of NIRMAN. I was very curious about NIRMAN program. I was hearing about search. I knew about search for long from my childhood, but since I was in Delhi for my education, so when NIRMAN started, I just kept hearing about it, that NIRMAN has been started and students are coming to NIRMAN, etc. And then I shifted to Pune, I also met some of the excellent participants of NIRMAN. So Kalyan Tangsare, Abhijit Dhere, so and I have worked with them. So since then I was very curious to come to NIRMAN and be part of NIRMAN as well. Since last evening when I came here, this curiosity actually now has transferred into a kind of a regret. That I really missed being part of the NIRMAN when I was a student, and I would continue to regret it. So first of all, my congratulations to all of you that you are part of NIRMAN family and you have associated yourself with the objective mission of NIRMAN. अभी जो गाना गाया आपने, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एक ग्रुप सॉन्ग मुझे याद आया जो हम लोग जेएनयू में हम लोग गाया करते थे। वो है जंगखोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, जंगखोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार वे शांति पे बार बार, जंग नहीं उठाओ आवाज। तो ये गाना हम लोग तब जेएनयू में गाया करते थे और दिस इज अ एंटी वॉर सॉन्ग, प्योर हिंदी एंटी वॉर सॉन्ग। और एक समय ऐसा था 1960s में, 1970s में, जब दुनिया में कई जगह पर एंटी वॉर मूवमेंट्स थी और कई सारे एंटी वॉर ट्रीटाइज सॉन्ग्स उसमें लिखे गए थे। मतलब वियतनाम के खिलाफ का जो मूवमेंट था, एंटी वॉर मूवमेंट, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और हमें वो 1950s से लेके इवन अर्ली 2000 तक इस तरह के एंटी वॉर मूवमेंट्स दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। Unfortunately, in last 20 years, these anti-war movements, they have lost their steam. And discourse now has been shifted decisively away from the anti-war sentiments, anti-war movements. And a general discourse is that which was prevailing earlier. Okay, war is inevitable. Wars are inevitable. They are constant. They have been part of human life, and we have to live with it. We have to die with it. This is not a new discourse. This has been quite an old discourse, and this is now returning again, or again having its dominance. So in this context, it is important to think about the alternatives to war. That what would be the alternatives to war? English is fine, or which language you prefer? I was told English, Hindi, Marathi, all are fine. All right, yes. But which language you like? Which language you generally prefer? You prefer a language of hate or a language of love? You prefer a language of exclusivity or a language of inclusivity? You prefer a language of dictation, dictatorship, or a language of participation? So this is what applies to war also.
that whether we would have a language of war in this world or a language of peace in this world. And for the language of peace, we need to have a grammar of peace in place. Now, there have been several and very serious attempts to create the grammar of peace. Not very recently, but at least for last 200 to 50 years, we are trying to create a language of peace in the world. And we are dreaming of a world that would be free of wars. वो एक उर्दू एक पोएम है ना, वो सुबह कभी तो आएगी, जेलों के बगैर जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी. This is a dream that जेलों के बगैर भी सरकार चलाई जा सकती है, तो उसी तरह जंग के बगैर भी दुनिया चलाई जा सकती है. तो ये सपना काफी लोग काफी सालों से देख रहे हैं, और सिर्फ ये अभी 200 to 50 years की बात नहीं है. In history we have seen that there have been urges of war and desires of peace. कि कई बार ये हुआ है कि लोगों को लगा है कि जंग करनी ही चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रही है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्राइड के लिए जंग होनी ही चाहिए. ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत रही है. बट विथ दैट देयर ऑल्सो हैव बीन डिजायर्स फॉर जंग, डिजायर्स फॉर पीस. We all know example of Ashoka. Ashoka at one point of time realized that wars are too destructive, devastating, inhuman, and therefore he then adopted a path of peace. Not only he adopted a path of peace, he started propagating a path of peace. And for that he believed that peace would come from your core belief in your daily life system. And for that he realized that you need to change your life system. So he then converted to Buddhism, and he thought that by converting to Buddhism and by propagating Buddhism, he would be able to establish peace all across the world. And he, wherever possible, he started propagating Buddhism. But this was a very short-lived experience, and it was shattered after Ashoka's death. Many centuries after, even Muhammad Paigambar, he also considered that once people would accept one belief system, and once there would be only one kingdom of God, then there would be peace. And he started uniting various warring tribes, and he established what generally today is known as Islamic State or a Caliphate earlier also. But the objective was, and that's why many people believe that Islam is a religion of peace, that Muhammad Paigambar, he tried to establish peace amongst the warring tribal factions of West Asia, and to considerable extent he succeeded for some time. But then afterwards again the entire experiment failed, and there have been wars that have been happening even in that particular area. There is one Chinese movie, few of you might have seen it, The Hero. It's available in English also. It was made in early 2000. There were two objectives. The first objective of making that movie was that Chinese people wanted to show to the world that they also could make movie as good as a Hollywood movie technologically, that they also could use all the latest technologies and could produce all those effects in their movies, and they did it fantastically. But it was also a political movie for the Chinese state, and the movie is about two warriors who wanted to kill the Chinese empire, because Chinese empire had that particular Chinese emperor had encroached on their state, tribe, and assimilated that part into the Chinese kingdom.
कि वो एक्सपांशन चाइनीज किंगडम का होते होते उन्होंने उनका जो छोटा राज्य था वो भी उसमें शामिल कर लिया. सो दे वांटेड टू टेक रिवेंज. और वो वहाँ से अपना जर्नी शुरू करके विथ ऑल देयर हीरोइक्स एंड ऑल दे रीच द पैलेस ऑफ चाइनीज एम्परर. And then they come to a moment when they were about to kill the Chinese emperor. And then one of those warriors, he abandons the mission suddenly. He said that no, I won't kill Chinese emperor. The other warrior, a female warrior, asks him why. I mean, we have faced so many troubles, and after so many challenges, we reached here, hundreds of kilometers away, and killed so many people. But now you don't want to kill the emperor. That was our life mission. And then he said that no, it's fine. I mean, our state now is no more a state. But look what the emperor has achieved. Emperor has united all the Han people. And now there is a peace across the kingdom. So the message that the Chinese state wanted to give to its people, that accept one state, and if you accept one state, one system, then there would be peace that would prevail all along. So that's the message that they wanted to give. So this is something that over the ages we have seen, that peace could prevail, peace would come if there is one system, one kingdom, and if everyone would accept that one system, one kingdom. There are obvious problems in that. The problem is that one system, it has to be a hierarchical system. Without a proper hierarchy of institutions, and hierarchy of leaders in that institutions, there cannot be a harmony. Only if you accept someone's superiority over you, then there would be peace. So because of that, therefore such systems also did not they were in place for long, and wars keep on happening throughout the human history. There is not an era where wars have not happened, wars have not taken place or so. But over last 200 years, there have been very, very serious efforts to find an alternative to war and to establish peace on the globe amongst the countries, states, etc. or so. And I would say that we have traveled few miles in that direction. I would not say that we have not achieved anything. Rather, I would consider that if we consider a human history of last 4,000, 5,000 years, compared to that, in last 200 years, 250 years, we have achieved a lot with regard to finding an alternative to peace. Now, the challenge before our generation is to take forward that process. Whatever was thought earlier, whatever processes were established, whatever ways were found out, to incrementally build on that and move towards a direction where there would be peace in the world. Now, efforts have been made at two levels. One, at the level of regulating the war. And another is basically philosophically thinking how wars could be eradicated at all. That we would create a system where there would be no wars. Now regulating wars basically means कि जंग होती रहे लेकिन जंग में कुछ rules हो, अपने उसके नियम हो. And we all know Mahabharata, the great text of Mahabharata. So wars है, the great war of Mahabharata है, लेकिन उसमें war के कुछ नियम भी है. कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही वॉर होगा, उसके बाद एक बार सूर्यास्त हो गया तो फिर वॉर नहीं होगा. दैट्स अ रूल ऑफ द वॉर दैट महाभारत थॉट ऑफ एट दैट टाइम. वॉर के बाद में यू कैन गो टू द एनिमी कैंप, यू कैन मीट your erstwhile colleagues, your relatives, or the soldiers on the other side or so. There were provisions of treatment of the injured in the war, that you can take them away from the battlefield and then you can treat them or so. Or when Lord Krishna decided that he would not take up arms in the war, that वो सिर्फ सारथ्य करेंगे लेकिन वो जंग नहीं लड़ेंगे. So he has to follow that because that then became rule of that particular war. कि वो फिर उसको तोड़ नहीं सकते हैं. And that then would apply to the opposite side also, that they would not try to kill Krishna because he is not fighting the war, he is only doing sarathya. So they would also follow it also. So this is regulating the war.
Now, from the 19th century, in Europe particularly, there were very serious efforts to regulate the wars, particularly in two respects. One was about the treatment of the injured soldiers and prisoners of war. कि जो जख्मी सैनिक रहेंगे तो उन्हें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और जो कैदी होंगे सोल्जर्स, तो उनके साथ भी किस तरह का सलूक करना चाहिए, उसके भी नियम बनाए गए। इसमें रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम सभी को पता है। तो रेड क्रॉस जिन्होंने शुरू की थी, उन लोगों ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये ऐसे ही नहीं हुआ कि 4 देशों को यूरोप के लगा कि इसके नियम होने चाहिए, बल्कि कुछ लोग थे जिन्हें वॉर पसंद नहीं था। वो जंग में जो कैदी जो सैनिक जख्मी होते थे उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनको उनका प्रोटेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं था। तो उस वक्त उन लोगों ने यूरोप के देशों के साथ मिलके कॉन्फ्रेंसेस की। दिस इज इन 19th सेंचुरी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जंग लड़नी है, आप जंग लड़िए, लेकिन जो इंज्यूर्ड होते हैं सोल्जर्स, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए आप हमें फैसिलिटेट कीजिए। हम ना ये साइड लेंगे ना वो साइड लेंगे, और दोनों तरफ के जख्मियों को हम ट्रीटमेंट देंगे। और फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि ओके फाइन, जो रेड क्रॉस का यूनिफॉर्म या बैच या फ्लैग जो होगा उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, और उन्हें उतना एक मौका दिया जाएगा कि वो उनको ट्रीटमेंट करें। तो ये पहला एक बड़ा ब्रेक थ्रू था कि इंजर्ड सोल्जर्स को किस तरह को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और उसी के साथ फिर आया कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे, कि जंग में जिन्हें कैदी बनाया जाएगा, तो उनके साथ भी किस तरह का सलूक आप कर सकते हो, किस तरह का सलूक आप नहीं कर सकते। आप सबको अभिनंदन की केस याद होगी, विंग कमांडर अभिनंदन, कि जो 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उनका फाइटर जेट LOC के उस पार गिरा, तो पाकिस्तान ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले क्या किया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अगले दिन सुबह की उनकी कॉफी पीते हुए की फोटो रिलीज की कि हमने उनको अच्छे से रखा है। तो देयर वुड बी नो क्राई अगेंस्ट पाकिस्तान कि भाई उन्होंने ट्रीट नहीं किया ठीक से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और सो। क्योंकि ये सारे कन्वेंशंस बने हुए हैं, ये सारे नियम बने हुए हैं कि अगर आप कैप्चर करते हो तो आपको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको सबसे पहले जो एनिमी कंट्री है उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि ये आपका जो सोल्जर है इस रैंक का, उसको हमने कैप्चर किया हुआ है। फिर आप उसके साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी देश फॉलो करते हैं, लेकिन रूल ये है कि यू कैन नॉट मिसबिहेव विद देम। We can keep it with them, but we cannot misbehave with them. So ये सारे रूल्स 19th सेंचुरी से धीरे 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 बनने शुरू हुए। At the end of the Second World War, सोवियत यूनियन में there were hundreds and thousands of German soldiers who were captured by सोवियत यूनियन। तो उसको लेके काफी निगोशिएशंस हुए कि अब सोवियत यूनियन को उनको छोड़ देना चाहिए या एक्सचेंज करने चाहिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स एक्सेट्रा। और सो दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। आई थिंक ओनली 10 or 20% ऑफ कैप्चर्ड जर्मन सोल्जर्स returned to their home places, and the others died somewhere in Soviet Union also. But the efforts were there that both the Germany's East and West Germany and Soviet Union, they were talking to each other, they were negotiating about exchange of the prisoners of wars etc. also. After that, in 1950s, when Korean War started, at the end of the Korean War, again the issue came up about, because there were prisoners from both the sides. The North Koreans captured South Koreans, South Koreans and Americans, they captured North Koreans. And the United Nations was there in place. And then again, I mean, one of the early successes of United Nations was that under United Nations, both North and South Koreans, they have exchanged a lot of prisoners of wars. Not all, but a lot of prisoners of wars. Those were captured by South Koreans, they returned it to the they returned to North Korea, and vice versa also. And India was chairperson of the committee that was established to negotiate this deal between North Koreans and South Koreans. So India played a pivotal role
in seeing that there would be exchange of those prisoners. So this was again about regulating the war, and we have achieved some successes in that particular domain. The second about regulating the war was that there should be least civilian casualties, that war must be fought between militaries, and there should be no attack on the towns, cities or civilian population. That with this, the sentiments increased, particularly in Europe, that there should be least number of civilian casualties, or there should be no direct attack on cities. And many European countries, they agreed to this. They said that, okay, our armies, militaries would fight the war, but we would not attack the cities directly also. So they somehow have come to this understanding at least. It's not that cities were not attacked, but they have come to this understanding. And to some extent they followed it. Not greatly, but to some extent they followed it. Particularly after the First World War, these sentiments increased tremendously across the Europe, that civilian population should be separated from military. And thus, between First World War and Second World War, European countries, they have come to a consensus that, okay, we will not attack civilians of each other. So initially, when the Second World War broke out, initially there were no direct attacks on civilian population. There was a continuous bombarding of United Kingdom and London that was carried out by the German war fighters, fighter jets at that time. But they also were mostly targeting radar system of United Kingdom. United Kingdom had created a fantastic radar system based on which they would get an early alarm of the invading German fighters also. They were targeting them. But on one night, suddenly it happened that British population in London, and particularly in the working class area, it got bombarded. And there was an outcry against that across Europe, but in United Kingdom. The Europe was already under the clutches of Hitler by then. But in United Kingdom, then everyone were, they were now demanding revenge, that now there should be a revenge. And then for the first time, the Royal Air Force of United Kingdom, they bombarded Berlin. So that was kind of taking a revenge or so. But the point here is that it did not happen initially at the start of the war. So both the war parties were conscious that they should not attack the civilian population. So it all happened because of the increased consciousness and the movements that were starting around that period, that yes, civilian population should be protected from war. But there is an obvious fallacy in this, because when two countries declare war against each other, the entire population gets involved in that war. So the entire population has to support war efforts. And that way they become part of the war effort. So if enemy would like to cut your supply lines, so obviously they have to attack the civilians who are transporting food grains, who are transporting other war essentials, etc. or so. They have to attack your train lines, etc. or so. And therefore, whenever war would happen, there is no guarantee that only the military would fight and civilians would not be under target or they would not die or so. So that's the obvious fallacy in that. The third attempt about regulating war, it also started around same time in 19th century. And it was about what is called as arms control. कि कुछ आर्म्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ये डिमांड बढ़ती गई कि ठीक है, आप वॉर फाइन, मतलब वॉर स्टिल वेर कंसिडर्ड एज इनएविटेबल, कि जंग तो होनी ही है, हमेशा होती आई है, अभी भी होनी है. लेकिन कुछ हथियार ऐसे हैं जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए. खास करके 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, in the early years of 20th century, poisonous gases were used in the war.
कि आप जो है आपको एनिमी के बहुत नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, या आप नज़दीक चले गए तो आप पॉइजनस गैसेस छोड़ दीजिए, तो उससे सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हो जाएंगे या मर जाएंगे, उस तरह का। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पॉइजनस गैसेस का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, तो तब ये डिमांड उठी कि पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इनह्यूमन। तो बुलेट्स फाइन, गन्स फाइन, टैंक्स फाइन, तलवारें तो थी ही, वो सब था, लेकिन पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको लेके यूरोप में काफ़ी डिमांड्स आगे आई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लीग ऑफ नेशंस बना था, तो लीग ऑफ नेशंस ने भी इसे टेकअप किया, और सभी देशों ने फिर ये माना कि ठीक है, पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर ये देखने को मिलता है कि पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि तब तक और ज़्यादा खतरनाक आर्म्स बन चुके थे और उनका इस्तेमाल होने लगा था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइटर जेट्स जो है आपके वो नहीं थे, थोड़ा बहुत ही माइनर उसका इस्तेमाल जस्ट शुरू हुआ था, इतने एडवांस तो थे ही नहीं। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो फाइटर जेट्स बहुत बड़े लेवल पे आ गए, और जर्मनी पहले, फिर रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम का, और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन का एयरफोर्स। तो इन्होंने जो वॉर लड़ी वो एयरफोर्स के बलबूते पे भी बहुत बड़े पैमाने पे लड़ी थी। तो लेकिन एक ये कंसेंसस बन गया था कि जहरीले गैस इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो आर्म्स कंट्रोल, किस किस कौन से आर्म्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेके भी एक डिस्कोर्स शुरू हुआ, और वो डिस्कोर्स फिर आगे बढ़ के इस पे आ गया कि केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स वॉर में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे कंट्रीज ने, सभी कंट्रीज ने नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने इसको लेके, यूनाइटेड नेशंस ने जो कन्वेंशन किया है, एग्रीमेंट तैयार किया है, उस पे साइन किया है कि हम लोग ना केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाएंगे, ना हम लोग केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना वॉर में अभी अलाउड नहीं है। दिस इज अगेन रेगुलेटिंग द वॉर। हालांकि अभी सीरिया में जो सिविल वॉर चला था, 12-13 साल सिविल वॉर चला सीरिया में, तो सीरिया के उस वक्त के जो रूलर थे असाद, तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने पॉइजनस गैसेस भी इस्तेमाल किए और उन्होंने केमिकल वेपन्स भी कुछ हद तक इस्तेमाल किए। या सद्दाम हुसैन को जिस इल्जाम में फांसी दी गई, वो भी इल्जाम ये था कि सद्दाम हुसैन ने, जो कुर्दिश पॉपुलेशन है इराक के नॉर्थ में, वो अपना इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, तो वो कुर्दिश पॉपुलेशन के खिलाफ पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल किया था, उनका पूरा मूवमेंट उसे कुचलने के लिए। तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट इन मास। इसको प्रोड्यूस करना अभी इतना आसान नहीं है, और उसको लेके यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज है जो इंस्पेक्शन भी कर सकती है। अगर इफ यू आर सिग्नेटरी टू दैट कन्वेंशन, देन यूएन एजेंसीज वुड कम टू यू एंड दे विल बेसिकली इंस्पेक्ट योर साइट्स, सस्पेक्टेड साइट्स, और इसलिए उनको बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करना उतना आसान भी नहीं है। तो ये एक तरीका था वॉर्स को रेगुलेट करने का, और ये देखने का कि जितनी कम कैजुअलिटीज हो सके, और खास करके सिविलियन कैजुअलिटीज कितनी कम कर सकते हैं हम, उतनी कम करने की कोशिश इन एफर्ट से हो रही थी। लेकिन इस पूरे दौरान क्या देखा गया कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम करने की कोशिश तो हुई, लेकिन ना आर्मी की कैजुअलिटीज कम हुई, ना सिविलियन कैजुअलिटीज कम हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स यूरोप में हुए, अफ्रीका में हुए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के पीरियड में भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत बड़े लेवल पे हुई, और वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों लेवल की वो कैजुअलिटीज थी। तो ये जितने भी एफर्ट्स थे ये सफिशिएंट नहीं है, और आप पुराने वेपन्स को आप, या उस वक्त के जो नए वेपन होते हैं उसको आप भले ही बैन कर दीजिए, लेकिन नए वेपन तैयार हो जाते हैं, और नए वेपन तैयार होकर उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पे तो बैन है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पे पूरा बैन नहीं है, लेकिन पार्शियल है।
पार्शियल इस तरह से है कि फिर वही एक मूवमेंट तैयार हुआ था, खास करके हिरोशिमा नागासाकी के बाद एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट तैयार हुआ था कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करना चाहिए और किसी भी देश ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स पजेस नहीं करने चाहिए। उस वक्त भारत भी उसको लीड कर रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स, वी वांट अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक नहीं थे तो अब क्यों रहे, कोई जरूरी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स होना। तो 1950s 1960s खास करके हिरोशिमा नागासाकी के जो सर्वाइवर्स थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, जापान का पॉपुलेशन, यूरोप में एक बड़ा पॉपुलेशन था, भारत जैसे देश जो उस वक्त आजाद हुए थे ऐसे देश, अमेरिका में भी एक बड़ा तबका था जो इस बात की जिद कर रहा था कि सभी देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ देना चाहिए, किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहिए। तो इसके तहत 1960s में काफी सारे निगोशिएशंस हुए और फाइनली जाके 1967-68 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में ये कहा गया कि उस वक्त तक जिन लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, जो 5 देश तब तक न्यूक्लियर जिनके पास थे, वो देश छोड़ के बाकी कोई देश फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और कुछ देश छोड़ के, भारत जैसे कुछ देश छोड़ के ज्यादातर देशों ने ये बात मान ली कि ठीक है, हम हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का हमारा जो राइट है वो राइट हम लोग जो है छोड़ देते हैं। ये बात उन्होंने मान ली। और आज अगर हम देखेंगे तो हालांकि करीब 10 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन बहुत सारे देश जो न्यूक्लियर वेपन आसानी से बना सकते थे, उन्होंने खुद होके ये कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। जापान उसमें है, जर्मनी उसमें है, ब्राजील उसमें है, साउथ अफ्रीका उसमें है, यूरोप के और भी कई सारे देश उसमें है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स। तो पार्शियल सक्सेस है कि अगर ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं होती तो दावे के साथ हम कह सकते हैं कि कम से कम 35-40 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते। लेकिन वो नहीं है क्योंकि ये ट्रीटी बनी, और वो ट्रीटी बनने में हालांकि इंडिया डिड नॉट बिकम पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी, इंडिया डिड नॉट साइन दैट ट्रीटी, लेकिन इंडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई थी कि ये ट्रीटी होनी चाहिए। वी डिड नॉट साइन इट बिकॉज हमारा बिलीफ ये था कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्होंने भी अपना एक टाइम टेबल देना चाहिए कि ठीक है, यू कैन नॉट डिस्ट्रक्ट इट इमीडिएटली, बट इन अनदर 5 years 10 years 15 years यू विल गेट रीड ऑफ योर न्यूक्लियर वेपन्स। और जब ये करने से उन देशों ने मना कर दिया तो भारत ने भी फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की। तो ये आर्म्स कंट्रोल के एफर्ट्स भी इस तरह से पिछले 150-200 साल में धीरे धीरे बढ़ते गए और उसको पार्शियल सक्सेस मिला, ये हम लोग कह सकते हैं। अभी लास्ट 20 years पर्टिकुलरली 2004-5 के बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह के जो एफर्ट्स थे आर्म्स कंट्रोल के, वॉर को रेगुलेट करने के, उस दिशा में कोई नई पहल नहीं हुई है। देयर आर नो न्यू इनिशिएटिव्स इन दैट डायरेक्शन कि इसको और स्ट्रिंजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जो देश इसमें सहभागी नहीं है उन्हें उसमें हम किस तरह से ला सकते हैं। इस दिशा में पिछले 20 साल में कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट रशिया और अमेरिका, इन 2 देशों के बीच में भी जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हुई थी, जिस ट्रीटी के तहत दोनों देशों ने माना था कि न्यूक्लियर वेपन्स हम एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ाएंगे, या एंटी मिसाइल सिस्टम्स हम लोग एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ाएंगे, या एक लिमिट के बाद उन्हें नए एरियाज में इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। तो उन देशों ने भी वो ट्रीटीज जो होती है वो जनरली 10 साल के लिए 20 साल के लिए होती है, एंड नाउ व्हेन दे आर रिलैप्सिंग तो वो उन्हें फिर से रिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले टर्म में ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो ये ट्रीटीज रिन्यू नहीं करेंगे। तो ट्रीटी रिन्यू नहीं करना मतलब है कि फिर आप और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी भी ये अनाउंसमेंट किया था कि वो फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो ये जो गेन्स थे वो गेन्स पिछले 20 साल में हमें ये दिख रहा है कि हम उन पे पानी फेर दे रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, और उन्हें एक साथ रखने में, बांधे रखने में और आगे बढ़ने में हमें कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। ये आज एक बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है।
नहीं, ये तो हुआ कि वॉर को और आर्म्स को रेगुलेट करने के एफर्ट्स, लेकिन इसके साथ साथ फिलोसॉफिकली पॉलिटिकली भी काफी इस पे सोचा गया कि कैसे हम वॉर से, जंग से हम निजात पा सकते हैं, और ये थिंकिंग भी 19th सेंचुरी से काफी बढ़ने लगा। इसमें 3 या 4 मेजर स्ट्रीम्स इमर्ज हुई है जो बिलीव करती है कि उनके तरीके से ही जंग से निजात पाया जा सकता है। ये मतलब ऐसे है कि एक कोई सीरियस डिजीज है और उसको लेके एलोपैथी कुछ सोचता है, होम्योपैथी कुछ सोचता है, नेचुरोपैथी कुछ सोचता है, यूनानी कुछ सोचता है। सबका मकसद है वो डिजीज को ठीक करना, लेकिन वो किस तरह से ठीक होगा उसको लेके जो है अलग अलग रास्ते वो अपनाना चाहते हैं। तो उस तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स इमर्ज हुई है जो सोचती है कि इस तरीके से ही वॉर को हम लोग रोक सकते हैं या उससे हम लोग पूरी तरह से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। उसमें से एक पहली है जो ये मानती है कि द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ वॉर इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर फॉर एवर, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म कहते हैं। ये रियलिज्म की थ्योरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हैंस मॉर्गेनथ्यू नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, डिप्लोमेट एंड साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये एक उनकी बुक लिखी थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने इसे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म कहा था। और उसके तहत उन्होंने कहा था कि वॉर्स आर कांस्टेंट, वॉर्स आर इनएविटेबल, और एक ही तरीका है वॉर ना होने का कि सभी देश इसके लिए हमेशा तैयार रहे कि कभी भी जंग हो सकती है, और आप अगर उसके लिए तैयार रहेंगे तो दूसरे देश जो है वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि ये कोई नई चीज हम नहीं बता रहे, ये चीज मैकियावेली ने भी बताई थी, और यही चीज एंशिएंट पीरियड से सारे हर जगह पे ह्यूमन सोसाइटी फॉलो करते आई है कि वॉर्स को रोकने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और अपने आप को प्रिपेयर करके ही वॉर्स को रोका जा सकता है कि आप अगर ताकतवान है तभी आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और आप वॉर से बच जाओगे। उसको उन्होंने रियलिज्म कहा था। लेकिन जब वो रियलिस्ट खुद ये कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है और सैकड़ों सालों से ये है, लेकिन सैकड़ों सालों से फिर वॉर्स भी हो रहे हैं, तो ये जो जिसको वो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं, वो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर से तो वॉर्स रुके नहीं है, वॉर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं रुकी है, उसके होने वाला डिवास्टेशन भी नहीं रुका है। और पिछले मतलब जब से ये प्रॉपर थ्योरी के रूप में सामने आया है उसके बाद भी ये देखा गया है कि वॉर्स तो हो ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली वॉर्स हो रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें प्रॉब्लम यही है कि एक तो सभी देश, कभी भी ये नहीं हो सकता कि सभी देशों की ताकत, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के समान रहे, क्योंकि साइजेस डिफरेंट है, रिसोर्सेज डिफरेंट है, पॉपुलेशन के लाइकिंग्स डिफरेंट है, जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ सबकी एक समान रहे ये कभी हो नहीं सकता है। और इसीलिए ऑब्वियसली फिर उसी थ्योरी के तहत, जिसमें वो कहते हैं, एक थुसिडाइड्स नाम का एक हिस्टोरियन हुआ था थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स के समय में, और तब एक बहुत बड़ा वॉर ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच में हुआ था, एंड थुसिडाइड्स हैड रिकॉर्डेड दैट वॉर कि कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो थुसिडाइड्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वो फेमस स्टेटमेंट ये है कि द स्ट्रॉन्ग वुड डू वॉट एवर दे वुड लाइक टू डू, द वीक विल सफर व्हाट दे मस्ट सफर। तो थुसिडाइड्स ने कहा था कि ये ऐसे ही रहेगा, आप वीक रहोगे तो आप सफर करोगे ही। तो ये उस वक्त से चला आ रहा स्ट्रीम है कि आपको स्ट्रांग ही होना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री ये दिखाती है कि ये अनइवन मिलिट्री बैलेंस हमेशा रहेगा, वो कभी भी सेम नहीं होगा, कभी भी सारी पावर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। इस पे सॉल्यूशन क्या है? इस पे सॉल्यूशन ये है कि ठीक है, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, तो आप फिर अलायंसेस बनाइए कि जो स्ट्रांग है उसके आप अलाय बन जाइए, और उसका अलाय बन के फिर आप जो है अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो नाटो हम सुनते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और कोल्ड वॉर के पीरियड में सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट बनाया था, तो ये उसके क्लासिक एग्जाम्पल्स है कि नाटो में ऐसे बहुत सारे देश थे जिनकी मिलिट्री वीक थी,
लेकिन उनको सोवियत यूनियन के खिलाफ रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने नाटो बनाया कि वी विल प्रोटेक्ट यू, आवर न्यूक्लियर वेपन्स आर देयर, आवर एंटायर मिलिट्री स्ट्रेंथ इज देयर, वी विल प्रोटेक्ट यू, और ये मिलिट्री अलायंस से हम सोवियत यूनियन का सामना करेंगे। सोवियत यूनियन ने भी वही किया, उन्होंने भी वार्सा पैक्ट बनाया और 2 बड़े मिलिट्री अलायंसेस उस समय बने। उसके पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके पहले भी इस तरह के मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, लेकिन उन मिलिट्री अलायंसेस का भी कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि वो मिलिट्री अलायंसेस एक दूसरे के खिलाफ में फाइनली लड़े। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं लड़े, फाइनली वो एक दूसरे के खिलाफ में लड़े। तो मिलिट्री अलायंसेस बनने से लड़ाई नहीं होती है, ये भी तर्क जो है सही साबित नहीं हुआ है। अभी हम जो रशिया यूक्रेन युद्ध जो देखते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध का तर्क यही है। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बनेगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए हम यूक्रेन को सबक सिखाएंगे और ये युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन ये कमिटमेंट देगा और नाटो ये कमिटमेंट देगा कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। तो अभी जो वॉर हम देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, ये रशिया यूक्रेन वॉर की जड़ ही है नाटो, मिलिट्री अलायंस, वही उसकी जड़ है। तो मिलिट्री अलायंसेस बनाने से वॉर नहीं होगा, ये भी जो है अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। इसलिए भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति जो अपनाई थी, नॉन अलाइनमेंट, तो नॉन अलाइनमेंट के जड़ में यही था कि हम किसी का भी मिलिट्री पार्टनर नहीं बनाएंगे, कोई मिलिट्री अलायंस हम नहीं करेंगे, इसका साइड नहीं लेंगे, उसका साइड नहीं लेंगे, वो सारी दूसरी बातें हैं, लेकिन बेसिक ये था कि मिलिट्री अलायंसेस का हम लोग पार्ट नहीं होंगे और दुनिया में भी कोई मिलिट्री अलायंसेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो हुआ था वो भी मिलिट्री अलायंसेस उसके पीछे की एक बड़ी रीजन थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीछे की भी मिलिट्री अलायंसेस एक बड़ी रीजन थी। तो ये एक स्ट्रीम हुआ रियलिज्म का जो कहता है कि सभी देश न्यूक्लियर वेपन्स बना ले तो सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में आके अभी 75-80 साल हुए हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि ये 80 साल में कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। और रियलिस्ट जो है वो यही बात कहते हैं कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में भी जो वॉर नहीं हुआ, कोल्ड वॉर था लेकिन वॉर नहीं हुआ क्योंकि दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे। और इसीलिए सभी देशों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे या आप ऐसे देश का आप मिलिट्री अलाय हो जाएंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो फिर कोई वॉर नहीं होगा। तो ये एक तर्क है जिस पे रियलिस्ट बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि ये तरीका अपनाने से कोई वॉर नहीं होगा। लेकिन इसमें जो धोखा है वो धोखा बहुत बड़ा है। धोखा यह है कि जितने देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे उतना ही न्यूक्लियर वेपन्स की यूज की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आज 5 देशों के पास, 6 देशों के पास ही ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स है, 7 देशों के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स है, 2-3 देशों के पास कहा जाता है कि है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है इस तरह से, लेकिन उससे प्रोबेबिलिटी फिर भी काफी कम है। जब 25, 30, 40, 50 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल न्यूक्लियर वॉर दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा वेपन है कि जिसके साथ यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। मतलब ये कोई गुलेर नहीं है, ये कोई तलवार नहीं है कि 1-2 बार चला दी और फिर मैन कर दी। वो एक बार जब निकल गई तो निकल गई, फिर देयर इज नो गोइंग बैक। और इसीलिए इस तर्क के साथ जाना मतलब कॉन्स्टेंटली उस फियर में भी रहना, कॉन्स्टेंटली उस फियर में रहना कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड लॉट ऑफ कंट्रीज दे हैड लिव्ड इन दैट फियर। If you go to Europe, in Europe you would see there are tunnels, there are war shelters, nuclear war shelters that were built up during that period because the threat of nuclear war between Soviet Union and United States was very real. Very real. They just avoided it, but it was very real. So the choice then would be basically to constantly live under that fear of a nuclear war, and even a slightest mistake, if it would push us towards that devastating war, that basically would be end of humanity. So whether we really want to take that chance. So this is about one stream that wants to create a world without war but not a world without weapons. According to them, more weapons would prevent war.
The second stream is more interesting. The second stream is what generally in international relations is called as liberalism in international relations. They believe that if all the countries become democratic, then there would be no war. They believe that democracies don't fight against each other. And they give a lot of examples of it. That major wars mainly had happened between democracies and non-democracies. So they say that if your core system is democratic, then there is least possibility that you would go to the war. फिर आप दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे और इसीलिए दे आर ऑन द मिशन टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज एवरीवेयर. सो द वॉर्स दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैड फॉट in last 100 years, more than 100 years, all of them basically were not to protect US sovereignty, not to protect US territorial integrity, but they were about protecting democracy somewhere else or establishing democracy somewhere else. So they participated in First World War, Second World War to protect democracy. They started the Korean War basically to prevent spread of communism that they considered as danger to democracy. Or their participation in Vietnam War, or latest cases are about Afghanistan and Iraq. That the Afghanistan and Iraq war were officially about establishing democracy in Afghanistan and Iraq. So they very seriously they believe that if all these countries they would become democratic, then those countries would not have any direct conflict with that of United States. Here problem is that democracy is not something that you can impose. Democracy or any kind of political system, it has to be evolved. It must evolve from the people also. And all such experiments, they have failed, where the other country, they have tried to impose any other system on other countries, whether it was about communism. Soviet Union's efforts to impose communism on East European countries. So finally the East European countries revolted and they had given up that one. Or the American efforts to establish democracy also. And under the garb of establishing democracy, what Amrut was referring earlier, that basically has become part of their political economy. That unless now they would fight wars, their economy would not survive or would not flourish. And therefore, for flourishment of their economy, they want to establish democracy everywhere by fighting the war. So when United Kingdom and France, they joined hands against Germany in the First World War, their war cry was that this is the last war to prevent future wars. So they said that this is the great war to prevent future wars. And they claimed that if they would win this war, this is how they were convincing their population. They said that if they would win this war, then they would be able to establish democracy all across Europe. And once democracy would get established all across Europe, then there would be no wars that would happen in the future. But then the Second World War happened, and now the Ukraine war is also happening. So this stream also has really not been convincingly successful in terms of preventing wars since it has emerged, particularly with Woodrow Wilson's 14-point formula that he had given after the end of the First World War. So, the third is related to this liberal stream itself, and they are called as interdependent liberals. What they believe, now the liberals also believe that not merely democracy, but they also believe that there also should be free trade. And according to them, without free trade, there cannot be democracy. That a democratic country essentially needs to be a country that believes in free trade in the world also. The interdependent liberals, they believe that let there be free trade across the world. And this free trade would create interdependency amongst the countries. To cut it short, US-China is one of the examples of it, or China-Japan is one of the examples of it. That they are rivals, but there is a huge trade that is happening between them. And because of that trade, they are depending on each other. Their economies are depending on each other. And as these economies are depending on each other, they would not dare to start a war. And there is a merit in this if we consider last 50 years or so.
that the arch rivals, they also have become or maintaining normal relations, or trade between them has increased tremendously, and now because of trade they are quite cautious in terms of going to the war. But the fallacy in this argument is that the trade is not merely for the sake of trade. There is an element of profit that is involved in trade. Now, when the trade would become adverse to you, when you would not be beneficiary of the trade, you would really not like to be part of that trade arrangement. This is what Trump is trying to do now. According to Trump, okay, fine, till 10 years ago, 20 years ago, trade agreements with China, with rest of the world, those were benefiting United States, but no more. Or rather, it's not that US really is suffering, but the other countries are prospering more. China is prospering more, South Korea is prospering more, Japan is prospering more. And that is something that, again, the first stream, the liberals, the realists, they believe in. They believe that power is always relative. It is not only about how powerful you are or how prosperous you are. It is also about how powerful and prosperous the other countries are. So this is a competition. This is a competition. And therefore, in interdependence stream also, the problem is that once trade relations would become adverse to you, you would try to get out of it. And this would create immense tensions amongst those countries. Now, this is what precisely happened before the First World War. That before First World War, the countries, they started to erect trade borders, particularly the European countries, among themselves also. And that had then led to tremendous tension amongst them, and finally the First World War happened, or then the Second World War also happened. So there is some merit in this case, but still it is untested, completely, it's not that it is fully tested one or so. And particularly when, if there would be a great depression or a recession, so what would happen in such cases? So that is also something that we really do not know in this particular case also. The fourth stream is that believes in construction of as many institutions as possible, international institutions, and through international institutions building trust amongst countries. That you build as much of trust between the countries, amongst the countries, through agreements, through conventions, through treaties, through international organizations, and through that you try to resolve your disputes peacefully. So that is the fourth stream. That is generally called as institutional liberalism. So United Nations, World Trade Organization, World Health Organization, and all such organizations, European Union, all such organizations, they say that, I mean, this is what we see today could just be the tip of the iceberg. To establish peace and avoid war, we would need at least 8-10 times more of such organizations. For example, European Union is there, but in South Asia, even though SAARC is there, SAARC is the opposite pole of European Union. That as much as the European Union is successful, SAARC is exactly unsuccessful in the same proportion or so. So unless SAARC would become successful, unless African Union would become successful, unless ASEAN would become successful, there is a conflict that is going on between two countries in ASEAN, Cambodia and Thailand. So unless ASEAN also would become successful, so this would not work, but that is, according to them, is a way forward. To build trust and to build mechanisms to solve the disputes, to solve the problems. For example, the Indus Water Treaty between India and Pakistan is one of the best examples of how you basically build trust between two countries. A treaty that survived till now, till the recent conflict, all the conflicts between India and Pakistan. But that merely is not sufficient. If there would be 100 of such treaties between India and Pakistan, then perhaps that would be able to build peace between India and Pakistan. There have been many such agreements that are there between India and China. And now, as a result of those agreements, there is comparatively much better peace between India and China. I mean, whatever we keep on hearing in media, the numbers do not reflect in that. For example, the casualties in a conflict between India and China
After 1967, first time the casualties happened was in 2020. In between 1967 and 1920, there was no casualty between India and China. No direct casualty. I mean, soldiers may die on the border, but because of natural causes or so. After 2020, again, there is not a single casualty or so. Now, why this is happening? This is happening because both the countries, they have entered into multiple agreements from 1990s onwards. So in 1993 there was agreement, 1996 there was an agreement, 2003 there was an agreement, 2013 there was an agreement. What all these agreements did, very simple things. First, they agreed that no matter what, we will not use fire gun. That is a rifle, revolver, machine gun or so. We will not use fire gun. So that is the agreement between both the countries. And therefore in 2020 also, when the conflict happened, fire gun was not used. So it was basically happened with hammers, sticks, stones, etc. also. But fire gun was not used. The second was that if during patrolling, if both the armies would come face to face, then what they should do? They established the protocol that they would not keep their tents there facing each other. They would not follow the retreating party or so. So peacefully they basically would take a divorce and go to different directions. So that is something that through agreement they have established. Now if there would be more such agreements between India and China, then even the minimum tension that exists there between India and China, it would also not be there also. But saying all of this, if we really go to the root causes of the wars, and it is there that we have to basically deal with this core question. The root causes of war, if we look at it, you also could identify it that religion is one of the causes of wars. Many wars, they had been fought in the name of religion in medieval period and even recently also. So that is one of the causes. Resources or territories, that is another cause. That countries, they lay claim on territories basically to get more resources. That is another cause of war. Nationalism is a great cause of war from the 19th century onwards. From 19th century onwards, most of the wars, they have been fought in the name of nationalism. So First World War, Second World War, all the countries, they were fighting the war in the name of their own nationalism. So in today's context, if we have to find a solution to the causes of wars, then we basically need to find solution to or alternatives to nationalism. Unless we find an alternative to nationalism, it is very difficult to find an alternative to war. Unless we find an alternative to settling the territorial conflict through war. Now, the alternative could be negotiations, give and take, and many such things, or joint claim on those territories. So many such could be the alternatives to such things. And the third is religion. So unless we act against religious extremism, and unless the religious fanaticism cessates in the world, it is very difficult to find an alternative to war. So these are the basic causes of wars, and to find the alternatives, now these multiple paths, they are available to us. Another reason or cause which goes with nationalism, religion, is issue of ethnicity or issue of language. So these are also the causes, but they are related to some extent to religion or nationalism or so. Now, if today we look at many of the potential conflicts, so many of those potential conflicts are also a result of or their nature is the ethnicity that is involved in that conflict. So India-Pakistan conflict, it is the Kashmiri ethnicity that is involved there. Or if you look at some of the conflicts in West Asia, that particular ethnicity in West Asia is involved in that particular conflict also. Here, the
issue of nationalism and nation state also comes in play. Now, with emergence of nationalism and nation state system establishing itself firmly in 19th and 20th century, what we are witnessing today is that this nation state system has failed to resolve many of the outstanding disputes for last 100 years. So in Russia-Ukraine, what is the dispute? NATO is one aspect of it. But what Russia is trying to do, Russia is trying to establish its control over the entire Russian-speaking territory of Ukraine. Because Russia believes that the entire Russian-speaking territories in East Europe, it should become part of Russia. So Ukraine, there are Ukrainian people and Russian people. And what Russia has currently did, they have basically established control over the Russian-speaking territories. So here, Russia is directly challenging a notion of multi-ethnic nation state. That in one nation state, multiple ethnicities can exist. This is something that Russia is directly challenging. Palestine-Israel conflict, it is the same cause. That both the parties, they believe that either the Jew people would survive or the Palestinians would survive. They do not believe that under one nation state of Palestine, both Jews and Palestinians, they can stay there safely. They really don't believe in that. Or many such issues. For example, if you take the issue of Tibet. So the Tibetans fear that they would lose all their identity, cultural identity, if they would remain under control of China. That China would basically convert them to Chinese, and they want to protect their Tibetan identity. So most of these conflicts are about the way nation states have been established and the notion that nation states should be singular in terms of religion, ethnicity, language, etc. also. And when that is not happening, the conflicts are arising. Now, India is the best example that wherein multi-ethnic, multi-religious, multi-linguistic people, they could live under one nation state. But Russia is not willing to follow this. But Russia alone is not to blame for this. This is what the Ukrainians also did to the Russian-speaking people in Ukraine. Or this is what the Sinhalese in Sri Lanka, majority of the Buddhists in Sri Lanka, they have done to the Tamil population in Sri Lanka. That they forcefully tried to take away their cultural linguistic rights. And therefore the conflict in Sri Lanka arose between the Sinhalese and Tamilians. So if we really have to prevent these conflicts, then we have to go to the core of the issues with regard to how the nation state should be there in the first place. Whether there could be multi-ethnic, multi-linguistic, multi-religious nation states. Secondly, even how far we should embrace nation states, that also should come under discourse. Because nation states have failed to resolve the outstanding disputes. And it is not that the system of nation state is in place forever. The system of nation state has evolved from 18th century onwards. And as it has evolved, certainly it would also demise. So it would also somewhere it would falter and then it would give way to some new system also. But currently the system of nation state has really not been able to resolve any of the outstanding disputes. North Korea, South Korea dispute, it stands where it was. China-Tibet dispute, it stands where it was. Russia-Ukraine dispute, again, this is not a new one. This is something that is happening from after establishment of Soviet Union from 1921 onwards or so. So, how we should look at nation-state system and how nation-states also should treat the minorities in those territories under them is also one of the issues. Now, lastly, I would like to give you one example which is kind of showing a way to such conflicts where multiple countries are involved with regard to particular ethnicity.
and it is about the Kurdish problem. You or few of you might have heard about it or read about it, but you should certainly search about a person called Abdullah Öcalan. He is a Kurdish leader. He is in Turkish jail from 1999 onwards. Till today he is in jail. He was a Marxist. He formed Kurdistan Workers' Party that led armed struggle against not only Turkey but against Syria, against Iraq, because the Kurdish population is scattered in all these areas. But after a while, Abdullah Öcalan, he had undergone a tremendous transformation, wherein he now has come to an understanding that armed conflict is not a solution to the Kurdish problem. And from jail, he has given call to his party to surrender the arms. And his party now has surrendered the arms. And this is not happening reciprocally. It is not that Erdogan of Turkish state, president of Turkey, is reciprocating. He is claiming it as his victory. He is saying that this is my victory against terrorism. But what Abdullah Öcalan is being experimenting from jail by giving directions to his party is that he has established a decentralized system in Kurdish Turkey, Kurdish Iraq and Kurdish Syria. So Kurdish population is on the borders of all these three countries. And they have decentralized themselves to such an extent that because of this decentralization, either Turkey or Syria or Iraq, they have really not been able to enforce any kind of powers over the Kurdish population. They are running their own schools, they are running their own hospitals, they have gone into their own type of agriculture in that particular area, and they are trying to follow a self-sufficient lifestyle. A decentralized one, completely decentralized one or so. They are saying that we will build our own schools, we don't need central government to help us in running our own schools or so. And this has baffled everyone. Now, how to tackle this particular issue? That the entire population, it has gone into a very different kind of resistance. They are saying that, okay, I mean, we don't believe in your state system, and we also do not want what was their demand till this point of time. They are saying that we don't want a separate Kurdistan. We are giving up that demand. We don't want separate Kurdistan. That was the cause of the conflict between them. They are saying that the Kurdish people in Turkey are happy being in Turkey, but we will have our autonomous region and we will manage our affairs on our own entirely. And so as the Iraqi Kurdish and the Syrian Kurdish also. So now there is a new government in Syria and they are in a very serious negotiation with the Kurdish leaders in that particular area. And they are now giving them assurances that in the new Syrian constitution, the Kurdish autonomy would be protected completely and they should agree to be part of Syria also. So this is one of the ways through which the conflicts could be managed or alternatives could be found to the armed conflicts or so. This basically becomes a ray of hope that this is how the conflicts could be managed. I mean, this can be applied to any conflict. Israel-Palestine conflict, this model can be applied. I mean, of course, with the local necessities or so. So to any conflict, such models can be applied if the people and the movements there really show the will to find the alternative to what they have been subject to till this point of time. So what I have tried to deliver is basically I tried to give you a broad picture of the efforts to find the alternatives to war. There is no permanent, no fixed path. If that would have been there, we really would not have been discussing this particular issue there, if everyone knows the solution or so. So this is upon everyone to basically find the solution. Now, when we say that what we could do with this particular regard,
we obviously can ask very first question that what could be the alternative to war? I give you a very concrete example that when a terrorist attack happened in Pahalgam, so all of us were up in arms. Okay, revenge lena hai, revenge chahiye, revenge chahiye. We did not ask that what could be the alternative. Okay, whether finding the terrorist could be the alternative, whether having more sanctions on Pakistan could be the alternative, whether taking the local population in confidence and through local population finding the terrorist could be the alternative. Nobody talked about these alternatives. So ultimately what happened, a brief conflict happened between India and Pakistan, and both the countries are claiming victory in that. So India is claiming a victory, Pakistan is also claiming a victory, and Pakistan is much more emphatic now that they consider that they have prevented India from defeating them. So for them that has become a victory of sort or so. Now this all happened because what Amrut also has initially said, that we have become warmongers and we really do not think of the alternatives. So we immediately jump into the sentiments of taking a revenge, and that then the rationality basically takes a back seat. And when the rationality takes a back seat, obviously then violence takes a front seat, war takes a front seat. So this is something that we really need to ask to ourselves, and then together we can also raise the voice to find the alternatives. That first the alternatives should be found, and then we can think about the other options also. But without trying to find the alternatives, directly thinking of revenge and war, it's something that's the destructive path, it's an irrational path. And basically so far this has been showed that no one has achieved anything out of it also. So this is how we all can make an effort to find an alternative to war. So thank you so much.